Which of the following statements are correct? Among halogens, radius ratio between iodine and fluorine is maximum. So this is the true statement basically. The reason behind it is size of iodine is maximum. Size of iodine is maximum and size of fluorine is minimum. Size of fluorine is minimum. Absolutely right? Yeah. So the radius ratio between iodine and fluorine is maximum because of the size difference between them. So this is a true statement and it's in our bucket. Also, one more thing I want to actually conclude over here, and that particular thing is कि among interhalogen compounds, maximum number of atoms are present in iodine fluoride. This is absolutely the true statement. This is absolutely the true statement overall. The reason behind it is, what's the reason behind it? Okay, let me tell you one reason behind it and let me explain you about this particular thing. So over here, let me tell you, the thing is कि iodine जो है, it forms interhalogen compound with fluorine of the type XX-7. It refers to IF7. So iodine forms interhalogen compound with fluorine of the type XX-7. No other halogen forms such type of interhalogen compound. Clear? And it is correct because only iodine can form IF7, which has maximum of 8 atoms. Over here we are having 8 atoms. So this is also true. Now we are left with two options wherein we need to talk about the reactivity of interhalogen compounds and talking about that if they are more reactive, the bond length between the interhalogen compound is weaker basically. So let me explain you that particular thing. I hope that you will be getting the good idea about it. Okay. So if I just talk about the reason for interhalogen compounds, reactivity. Interhalogen compounds are more reactive. Interhalogen compounds are more reactive than halogen compounds. What is the reason behind it? Okay, let me tell you. So suppose if I take interhalogen compound ICl and normal halogen compound, suppose chlorine over here. Now what you mean by interhalogen compounds? I'll say it's a molecule made up of 2 or more group 17 elements. So ये देखो, it's a molecule made up of different halogen atoms. It's a molecule made up of different halogen atoms of group 17 basically. And these are halogen compounds which do have the same हेलोजन एटम्स विद देम. सो यहाँ पर Cl2 है, इसे हम हेलोजन मॉलिक्यूल बोलेंगे, इस ICl को इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलेंगे. ठीक है, हेलोजन कंपाउंड हम किसे कहेंगे? क्लोरीन को कहेंगे यहाँ पर. नाउ इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी, सो ओवर हेयर इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स डिफरेंट एटमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप. डिफरेंट atomic orbitals overlap. Okay, and over here same atomic orbitals overlap with each other. यहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग है. फाइन. यहाँ पर आई विल से, what do I have to say about it? Do you have any idea what I'm trying to say over here? So I'll just say यहाँ पर less effective overlap हो रहा है, यहाँ पर less effective overlapping है. Clear? Since the overlapping between orbitals of different atoms, जैसे iodine है और chlorine है, so यहाँ पर we do have different atomic orbitals. So since the overlapping between orbitals of different atoms is less successful in interhalogen than in the हेलोजन मॉलिक्यूल्स, सो XX बॉन्ड जो है हमारा कौन से वाला बॉन्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं? XX बॉन्ड इज वीकर. XX डैश बॉन्ड इज वीकर. ठीक है, देन
XX बॉन्ड, ये XX बॉन्ड आपको कहाँ मिलेगा? हेलोजन में देखने को मिलेगा विद सिमिलर हेलोजन एटम्स, और यहाँ पर दिस बिलोंग्स टू इंटर हेलोजन wherein we are talking about different halogen atoms. So यहाँ पर less effective overlapping है in interhalogen. So ये जो XX dash bond है ये weaker होगा in comparison to XX bond which we see in halogen. That's absolutely right. So if this bond is weaker, अगर ये bond weaker है तो ये easily breakable है. अगर weaker bond है तो easily breakable है, और अगर easily breakable है that means it's more reactive. It's more reactive बच्चा पार्टी. हाँ जी. सो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स दे हैव लोअर बॉन्ड एनर्जी. इजीली ब्रेकेबल है, इसका मतलब लोअर बॉन्ड एनर्जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ. इजीली ब्रेकेबल का मतलब यहाँ पर यही है कि लोअर बॉन्ड एनर्जी, हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए. ठीक है. सो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स हैव लोअर बॉन्ड एनर्जीज देन हेलोजन because orbitals of different atoms overlap less effectively. So interhalogen compounds, or you can say interhalogen bonds, they are weaker than diatomic halogen bonds. ये हमारा diatomic halogen bond ही तो है. ये क्लोरीन क्या है? Cl2 क्या है? This is diatomic halogen bond है. डायएटमिक हेलोजन बॉन्ड है इसके बीच में. येस. सो इंटर हेलोजन बॉन्ड्स आर वीकर देन डायएटमिक हेलोजन बॉन्ड्स एक्सेप्ट फॉर फ्लोरीन. इट इज ड्यू टू देयर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. क्लियर है? दैट्स एब्सोल्युटली राइट पीपल. सो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैव अ फार हायर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देन हेलोजन्स इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म. तो आई एम नाउ श्योर कि लीविंग FF बॉन्ड ऑल हेलोजन्स आर वीकर. All halogens have weaker XX bond than XX dash bond. भैया ये तो गलत है ना स्टेटमेंट. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. अभी बताया ना XX is of हेलोजन, जैसे क्लोरीन एंड क्लोरीन, और यहाँ पर I and Cl. समझ में आ गई वाली बात? हाँ जी. सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन कंपाउंड्स. ये ट्रू स्टेटमेंट है. हमें ट्रू स्टेटमेंट ही पता करनी थी. तो यहाँ पर आप देखेंगे 1, 3rd and 4th. 1, 3rd and 4th, they are correct. 1, 3rd and 4th are correct basically. ठीक है. 1, 3rd and 4th are the right answer to the question.